अमेरिका से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले टॉड शे, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद पाकिस्तानी लड़की से शादी की और गुज़िश्ता 17 साल से पाकिस्तानियों की मदद के लिए फलाही काम कर रहे हैं। लोग इनके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, आइए इन पर उठाए जाने वाले सवालात के जवाब उन्हीं से लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़र्रुख शाहबाज। आज मेरे साथ पाकिस्तान में रहने वाले, अमेरिका से यहाँ मुंतकिल होने वाले टॉड शे, जो बाद में यहाँ पर मुसलमान भी हुए, यहाँ पर शादी भी की, इनका एक बेटा भी है। पिछले 17 साल से ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अंदर फलाही काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब सैलाब आया तो ये सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए बलूचिस्तान और सिंध गए। इसके अलावा बेशुमार सवालात हैं जो इनके बारे में पूछे जाते हैं। आज ये चाहते हैं कि उनके जवाब भी दें। लोग इन पे तरह तरह की बातें भी करते हैं, चैरिटी वर्क, लेकिन लोग अब इनका चैरिटी वर्क जो है उसको तस्लीम करना शुरू हुए। टॉड शे और उनकी बेगम फौजिया की जो कहानी है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। व्हाट हैव यू सीन इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज? Well, Fauzi and I and the baby on the way down to Karachi to open up our House of Blessings for widows and orphans, the new house there, we decided to stop by for 4 or 5 days with the artist QB, Kratalain Baloch, who was also very interested in helping with the floods and had worked with, yes, the singer QB. She worked with us back in the 2010 floods before she had made it big. So we all went together to see some of the work that we're doing. We've established several tent villages near the border with Balochistan and Sindh in the Jekababad and Dera Murad Jamali, Gandaka, Jafrabad area. We're also working all the way down to Pangrio and Badin and Umarkot in these areas. We're also working as far north as Gilgit-Baltistan, Swat, Chitral, Noshara, Charsada, and down into these areas really hard hit, also Tanso Sharif near DI Khan, DG Khan, through there, as well as some areas of Balochistan that were the first areas hit by the flood in July when we first started the mission in Kamardin, Karez, Kila Saifullah, Kila Abdullah. People were surprised to see you there in the affected areas. You know, people were so traumatized by what they've gone through that anyone who will come to help them, they appreciate. And so I think that people are so traumatized, so exhausted, so devastated that they're just hanging on for dear life to survive in any way they can. What do you think about the word charity? You know, charity is when, to me, is when you're giving something of yourself and out of what you have to somebody else that you didn't have to give. It's something that you want to give from your heart, and you give because you want to give to someone who doesn't have as much, who's suffering, who doesn't have hope. And also giving should be giving something that you're giving up. In other words, maybe you're giving money that instead of going out for a fancy dinner or buying a brand new car, maybe it's giving that money instead of having that. So you're taking something away from yourself to do Allah's work, to give and have a greater purpose, to give to something beyond yourself and beyond your own people. But what happens is when you do that, you have this great feeling inside, and then you get back far more than whatever you gave at the end of the day. After some interviews, some people say that people give some harsh comments. People say that you are an agent of US, you are an agent of CIA. You feel sad about it? Well, after 17 years, yes, because there's a couple things here. There's actually negative comments that we both get. So what happens with me is we get the comment that, oh, he's this American Gora, he's in Pakistan, he must be with agent CIA and blah, blah, blah. But I just want to say one thing to those people. And actually, to be honest with you, brother, like your viewers and people, 90% of people are very appreciative and very kind, and they love us. Now you're also Pakistani. You have Pakistan national. Now I've got the ID card through her because so it's me that got the green card, not her. Yeah. So, and the other thing is that, let me tell you something that is really sad, is that they say she's gold digger, like thinking I'm rich. They just assume Todd is rich. I gave up my music career 17 years ago to do this relief work. I don't have
even I don't own a home in this world, not here, not in Pakistan, not in US. I don't own anything except my guitar, my laptop, a few clothes, you know, and if people knew the truth, they would wonder that why is this girl married this guy, he has nothing. He has no house to give her, he has nothing. Because I know in Pakistan it's very important you have a house, right? And we're working on that together as a partnership, trying to finally maybe get a house one day. So nobody should insult them. If they want to insult me, it's okay, but this is not fair to insult her just because I'm a Gora and she's a younger Pakistani woman, that automatically they think that bad of their own people, that they think that only a woman would only go for someone like me if they have money. Come on, this is not fair. नहीं, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि इनके पास कोई सासे नहीं है, कोई घर नहीं है पाकिस्तान में? बिल्कुल दुरुस्त है। ये बहुत फेमस सिंगर थे, बहुत ही फेमस सिंगर थे। इन्होंने आतिफ असलम के साथ भी गाने गाए हैं। तो अपना म्यूज़िक करियर इन्होंने बिल्कुल छोड़ के अब चैरिटी के लिए ये गाते हैं, चैरिटी इवेंट करते हैं, उस पे ये चैरिटी के लिए गाते हैं और फंड्स क्रिएट करते हैं अपनी एनजीओ के लिए। तो क्या इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, आपके साथ शादी की, अब इनके बच्चा है यहाँ पे, 17 साल हो गए यहाँ पे। कभी आपसे कहीं बैठ के जब कोई अकेले होते हैं, कोई इस तरह की बात की कि यार लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो इनके दिल पे क्या बीतती है? ये एक्चुअली इनके ये बहुत सेंसिटिव हार्ट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं ये। इनको बुरा बहुत लगता है, हर्ट भी होते हैं, लेकिन ये मतलब हम पाकिस्तानियों की तरह ये नहीं कहते कि हम इग्नोर करते हैं इनको, ये उनका सामना करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं ये। आपने कहा कि ये जब कोई किसी को कोई बात कह दें तो ये कहते हैं ये बात मैंने कह दी और ये वादा हो गया, वादा हो गया। ये जो है ना इनके लिए मैंने ये इनमें खासियत देखी है और मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा होगा कि जिसने इन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो हमारे पाकिस्तानियों में तो कहते हैं ना जी मुझे फ़लाने ने बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसे हो। हम लोग नाम नहीं लेते ना, हम कहते हैं अभी इसको बुरा लगेगा, उसको जाके बता देगा। ये कहता है मुझे फौजिया ने तुम्हारे बारे में ये कहा था, मतलब इसको झूठ बोलने का पता ही नहीं है। और दूसरा ये अगर कोई इससे कह देना कि सड़क पे कोई कह दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये कहता है कि ठीक है आई विल डू फॉर यू। तो मतलब इसके लिए वो एक ये वादा उसको कंसीडर कर लेते हैं कि मैंने कह दिया और मैंने करना है। आप पाकिस्तान में इनके साथ कहाँ पर गए? मैं पाकिस्तान में इनके साथ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो सिंध और बलूचिस्तान वो एक डेजर्ट में आ जाता है एरिया, बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फौजिया टॉड एंड बेबी सुल्तान के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उस पे जो है ना वो मैं अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ। नॉर्दर्न एरिया में जहाँ आप जाते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि एनजीओ का काम है ना, फील्ड वर्क हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हमेशा इनके साथ जाते हैं? तो मैं हमेशा इनके साथ होती हूँ, इनके साथ जाती हूँ, तो फिर मैं वो वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, जो भी पाकिस्तान की खूबसूरती है उसको कैप्चर कर लेती हूँ। ये आप बताएं कि लोग आपके बारे में भी कहते हैं, जिससे उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई ये ग्रीन कार्ड लेगी और चली जाएगी यहाँ से, तो क्या वाकई आप यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉड को जो है ना सबसे पहले तो है इनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इनकी मोहब्बत इनसे छीनना नहीं चाहती, ठीक है। और दूसरा मेरा जो मेन इशू ये है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो बहुत ज़्यादा एजड हैं, बूढ़े हैं, 75-80 तक हैं, उनको कैंसर पेशेंट हैं वो, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। एमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो मैं वंस अ वीक अम्मी की तरफ चक्कर लगाती हूँ। और दूसरा यहाँ पे जो 17 साल से ये फलाही काम कर रहे हैं, अगर हम बाहर चले गए तो इनका ये काम रुक जाएगा। Todd, any message for Muslim, you can say Pakistanis, for Pakistanis, any message, anything you want to say? My message to Muslims in general, especially here in Pakistan, is, you know, there's so many wonderful people I've met and good Muslims here in Pakistan that have inspired me. But I've also seen Muslims who do good at showing they're Muslim. Maybe they pray 5 times a day, maybe they look very much the part of a Muslim, but then their behavior, I see them being cruel to animals. I see them, you know, doing dishonest work. So I think that, you know, if you're really going to be Muslim, then probably even more important than some of the rituals that one does is how you treat others. And when it comes to the weakest in society, whether it's the street children, whether it's widows and orphans, whether it's the most poor, disaster affected, or even animals, then it's how you treat them and what you do to them, not only as a people, as an individual, but also as a nation. आपका मैसेज उर्दू में क्या कहेंगे for Pakistanis, your message? एक दूसरे का ख्याल रखें.